हेलो नमस्कार नमस्ते बच्चा लोग, हाउ आर यू? हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। मैं हूं शैलेश वैद्य और आप लोगों का स्वागत करता हूं इस सेशन में। सो बच्चा लोग, आज अपन लोग क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी कहा था कि डेली अपन ये सेशन को करेंगे। सो टुडे विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट अपकमिंग क्वेश्चंस। सो यहाँ पे जैसे अपन लोग देख सकते हैं, सर कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एयर, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एयर क्या है? ट्राई दिस आउट बच्चा। ट्राई 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 बच्चा। सो बच्चा, कंप्रेसिबिलिटी अपन लोगों ने मैथमेटिकली इसको डिफाइन तो किया ही था। सर कंप्रेसिबिलिटी was equals to 1 upon the bulk modulus, also equals to volumetric strain। ओके बच्चा, सो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एयर, फिजिकली कंप्रेसिबिलिटी डिफाइन क्या करती है? सर द एबिलिटी ऑफ द फ्लूइड टू बी कंप्रेस्ड। तो सीधी सी बात है दैट गैसेस हैव मोर एबिलिटी टू बी कंप्रेस्ड, हाँ के ना? गैसेस हैव मोर एबिलिटी टू बी कंप्रेस्ड। जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी। ओके बच्चा, सॉरी टू कीप यू ऑन वेट। सो बच्चा, कंप्रेसिबिलिटी तो अपन लोगों ने डिफाइन करी। सर द एबिलिटी ऑफ द गिवन फ्लूइड टू बी कंप्रेस्ड। सो बच्चा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था कि थोड़ा बहुत इसके बारे में याद रखना। द की पॉइंट इज दैट सर एज द प्रेशर इंक्रीजेस द कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीजेस। पॉइंट नंबर वन, एज द प्रेशर इंक्रीजेस कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीजेस। सर पॉइंट्स नंबर टू, फॉर लिक्विड्स, आप लोगों का टेम्परेचर जैसे बढ़ता है वैसे ही आप लोगों की कंप्रेसिबिलिटी कम होने लगती है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस योर कंप्रेसिबिलिटी डिक्रीजेस। ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। Okay, next point is bacha, the bulk modulus of water is 2 gigapascal, that is 2 into 10 raised to the power 9 pascal। याद रख लो, कभी काम आएगा। And bulk modulus of steel is 160 gigapascal, that means 160 into 10 raised to the power 9। ये bulk modulus बोला है मैंने, compressibility नहीं बोला है। That means the bulk modulus of steel is 80 times that of the bulk modulus of the water, or you can say that water is 80 times more compressible than steel। That means the beta of water is 80 times the beta of steel। याद रहेगा, beta of water is 80 times the beta of steel। क्या ये याद रहेगा? हाँ सर, बिल्कुल याद रहेगा। देन सर, अगर अपन लोग देखें, सर द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज 20,000 टाइम्स, सॉरी, द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर इज 20,000 टाइम्स द बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर। That means you can say that air is 20,000 times more compressible than water। Air is 20,000 times more compressible than water। That means the compressibility of air is greater than that of the water। कितने times?
20,000 टाइम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इन जनरल व्हाट हैपेंस टू सरफेस टेंशन? ऑप्शन नंबर ए, remains unaffected by the temperature up to the critical temperature, remains unaffected by temperature, increase with the increase in temperature, and decrease with the decrease in temperature. बोलिए 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 बच्चा, नहीं हुआ सॉल्व आपसे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड सम थिंग्स अबाउट सरफेस टेंशन। डेफिनेशन में आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुका हूं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है देन फाइंड द पार्ट 1 ऑफ द सेम वीडियो ऑन दिस सेम चैनल, वेदर यू आर वाचिंग इट ऑन अनअकैडमी एसएससी जेईई चैनल, अनअकैडमी सिविल 101 चैनल, आप लोग दोनों पे पार्ट 1 को देख सकते हैं। ठीक है सर, नाउ कुछ पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टेंसाइल फोर्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट वाइज न्यूटन पर मीटर और जूल पर मीटर स्क्वायर। So surface tension force is tensile in nature, normal to the line drawn and always along the plane of interface. याद रखिए, tensile in nature, normal to the line drawn and always along the plane of interface. तो surface tension property की वजह से a substance tries to minimize its surface area, वो अपना surface area को कम से कम करने की कोशिश करता है, and it is always due to the unbalanced cohesive forces. याद रहेगा, it is always due to the unbalanced cohesive forces. समझ में आया? Some key phenomena is that the surface tension phenomena is observed at the interface of two immiscible fluids, not immiscible liquids. It can be liquid with liquid, liquid with gas, gas with gas, and liquids with solids also. याद रहेगा? Then sir dimension इसका हो जाता है mt-2. m के यूनिट सिस्टम में इसका यूनिट हो जाता है kg अपॉन सेकेंड स्क्वायर, CGS में ये हो जाता है ग्राम अपॉन सेकेंड स्क्वायर, and it is measured by tensiometer. याद रखिए, your surface tension force is measured by tensiometer. याद रहेगा, it is measured by tensiometer. Sir, as the temperature increases the surface tension force decreases. और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आप लोगों का अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स भी कम होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आप लोगों का अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स भी कम होने लगता है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ओके, and also the surface tension force decreases with the use of soaps and detergent, also with the use of kerosene. sir salt, sugar दोनों का यूज करने की वजह से आप लोगों का सरफेस टेंशन फोर्स बढ़ता है, दोनों का यूज करने की वजह से आप लोगों का सरफेस टेंशन फोर्स बढ़ता है। समझ में आया? ऑल्सो सर इसका यूनिट हो जाता है 1 न्यूटन पर मीटर, 1 Newton per meter also equals to 10 raised to the power 3 dyne upon second. Okay, it is a scalar quantity and at a critical temperature आप लोग एक different interface को define नहीं कर सकते, और इसी वजह से the force of surface tension is zero. इसी वजह से the force of surface tension at the interface is zero. Is this clear? Is this clear? So बच्चा, it decreases with the increase in temperature. In general, the surface tension decreases with the increase in temperature. Is this clear? चलिए आगे बढ़े।
Sir, the shear force per unit area which is required to maintain a unit difference in velocity between the two parallel layers of a fluid at a unit distance apart is called. वैसे इसको देख के आप लोग डायरेक्टली आंसर दे सकते हो, ये डेफिनेशन किसका पूछ रहे हैं. ट्राई करो. ओके बच्चा, चलो करें इसको. सो द shear force per unit area, you know that very well, according to the Newton's law of viscosity, tau shear stress, which is also equals to shear force per unit area, also equals to mu v by y. पता नहीं क्या क्या मैं वो देख रहा था अचानक. तो यहाँ पे बोला गया है shear force per unit area, so A is 1 meter square. Okay. Sir, unit distance apart 1 meter between the two parallel plates, unit difference of velocity 1 meter per second. So coefficient of absolute velocity. Absolute viscosity. सॉरी, भूल से वेलोसिटी बोल गया मैं. सर कोएफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या विस्कोसिटी भी आप लोग बोल सकते हैं. इज दिस क्लियर? सर, a fluid flow in which the density of the fluid changes significantly during the flow. डेंसिटी चेंज हो रही है. पहले क्वेश्चन था डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है. ट्राई करो बच्चा.
So बच्चा a fluid flow in which the density changes significantly. So a fluid flow in which the density of the fluid changes significantly during the flow is called compressible. याद रहेगा? चलिए. So the property which characterizes the resistance which a fluid offers to the applied shear is called, ये तो definition है पूरा का पूरा. ओके हुआ सर. ये तो डेफिनेशन है आप लोगों को विस्कोसिटी का. द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड व्हिच कैरेक्टराइजेस द रेजिस्टेंस व्हिच अ फ्लूइड ऑफर्स टू अप्लाइड शियर इज कॉल्ड विस्कोसिटी. चलिए ट्राई दिस न्यूमेरिकल. Sir, if the dynamic viscosity of a fluid is 0.5 poise and the specific gravity is 0.5, then the kinematic viscosity of the dead fluid in Stokes, ये R नहीं आएगा, Stokes is, ट्राई करिए, न्यूमेरिकल है. ओके चलो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, म्यू इज इक्वल टू 0.5 पोइस, पॉइंट 5/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, रो इज इक्वल टू 500. So nu kinematic viscosity is equals to mu by rho. So 1, 2, 3, 4. वन अपॉन 10⁻⁴ ये हो जाएगा आप लोगों का मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. और मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था दिस इज 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड या 1 स्टोक्स. यूनिट कन्वर्जन जो मैंने आप लोगों को बताया है वो अपने नोट्स के बाहर कभी नहीं जाएगी. सो ऑप्शन नंबर सी 1 इज द करेक्ट आंसर.
आगे बढ़े, चलिए। Sir, the intensity of pressure developed by the surface tension of 0.075 Newton per meter in a droplet of water of 0.075 mm diameter is. न्यूमेरिकल है, इजी है, पर हो जाएगा। ओके चलो। H इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे आप लोगों को ये वाला, अरे ये तो आप लोगों को वो पूछा है, इंटेंसिटी डेवलप्ड इन द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, सो गेज प्रेशर क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा अपॉन डी। गेज प्रेशर विल बी 4 सिग्मा अपॉन डी। देखो इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सरफेस टेंशन को मत करो, डिवाइड बाय 1000, तो 1000 से गया, सो इट इज 4000 किस में आया आप लोगों का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर ये हो गया 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर अपन को सीएम में चाहिए, सो सीएम में चाहिए, डिवाइडेड बाय 10⁻⁴। पॉइंट 4 न्यूटन पर सीएम स्क्वायर। ओके बच्चा, आगे बढ़े। सर मिल्क mixes with water due to the property of, ओके बच्चा, क्या हुआ, नहीं हुआ सॉल्व। सो मिल्क मिक्सेस विथ वाटर, इट विल बी ऑब्वियसली ड्यू टू वेरी गुड अडेशन और वेरी गुड कोहेजन, इट विल बी ड्यू टू वेरी गुड adhesion. So adhesion is the force of attraction between the different molecules. So
ओके बच्चा, sir, kinematic viscosity of the gases on the increase of temperature. तो बच्चा, न्यू इज इक्वल टू म्यू बाय रो। फॉर लिक्विड्स बात करें, फॉर लिक्विड्स थोड़ी बात करें, वी नो दैट वेरी वेल। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्या होगा बच्चे? अपन लोगों ने ये देखा था, डेंसिटी तो आप लोगों की बहुत ज्यादा टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होगी, बट आप लोगों की विस्कोसिटी भी जो लिक्विड की है वो कम होती है, बट डेंसिटी इज नियरली कांस्टेंट। फॉर लिक्विड्स ना, डेंसिटी, आप पानी को गर्म करोगे तो उसकी डेंसिटी थोड़ी वो बढ़ जाएगी, उसकी वॉल्यूम थोड़ी इतनी कम हो जाती है। सो इसी वजह से काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स विल डिक्रीज। इसी वजह से काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड्स विल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। But when we talk about the gases, as the temperature increases for the gases, sir, the viscosity of gases, kinematic viscosity of the gases increases, and बच्चा gases की तो density भी कम होती है, density decreases, and इसी वजह से kinematic viscosity of gases will increase, but it will increase rapidly. It will increase, but it will increase rapidly. क्या ये सबको समझ में आ रहा है? वो increase होगी, but it will increase rapidly. So क्या हो गया बच्चा? Sir, the kinematic viscosity of gases with the increase in temperature, it increases. Sir, sir, the coaxial cylinder viscometer makes use of which of the following laws? बोलिए 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 बच्चा। Okay, so obviously the coaxial cylinder viscometer will make the use of Newton's law of viscosity. होना तो वही चाहिए. So to measure the viscosity, different types of fluids will have different viscosity. तो apparatus अपन लोग यूज करते हैं, उसको रियोमीटर कहा जाता है. तो इसमें आप लोगों के बहुत सारे अलग अलग टाइप के विस्कोमीटर होते हैं, लाइक ओरिफिस टाइप विस्कोमीटर, कैपिलरी विस्कोमीटर, फॉलिंग पिस्टन विस्कोमीटर, रोटेशनल विस्कोमीटर. तो ये जो लॉ जिस पे बेस्ड है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है.
ये देखिए बहुत सारे केसेस है विस्कोसिटी के, आप लोग इनको एक बार थोड़ा समझ लीजिए, दिट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ये आप लोगों का रोटेटिंग सिलेंडर का केस है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन है, सॉरी। हाँ सर, द टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल्स टू, सर पी ए बी एस इज इक्वल्स टू पी गेज माइनस पी ए टी एम लोकल। देखो बच्चा, दो फॉर्मूला है, आप लोगों को पता होने चाहिए अच्छे से। एक होगा आप लोगों का एब्सोल्यूट प्रेशर, पी गेज इज इक्वल्स टू पी ए बी एस माइनस पी ए टी एम लोकल। एंड पी वैक्यूम, पी ए टी एम लोकल माइनस पी ए बी एस। सो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट प्रेशर इज बी इक्वल्स टू पी गेज प्लस पी ए टी एम लोकल। ये देखो, so pressure is always external normal compressive force per unit area, which is always due to some mass. It is a scalar quantity. चलिए, sir, which of the following law states that the intensity of pressure at a point in a static fluid is equal in all direction? So it is Pascal's law. Intensity of pressure at a point in a fluid at rest is same in all direction. ये देखो,
So the intensity of pressure at any point in a fluid at rest is same in all direction. Pressure is same in all direction. It is well defined magnitude, but उसका direction नहीं होता. इसी वजह से pressure is a scalar quantity. In absence of shear force, Pascal's law is applicable for the fluid in motion also. Sir, the SI unit of pressure is okay, bacha. So SI unit of pressure is Pascal Newton per meter square. Sir, 1.01325 bar pressure is equivalent to. The standard atmospheric pressure is equals to 1.01325 bar, also equals to 760 mm of Hg. (10.32 meter of water). Sir, the barometer is used to measure.
हो गया बच्चे? So, bacha, barometer is used to measure the atmospheric pressure only. It is not used to measure the velocity of liquid, not the pressure in pipes and channel, not the difference of pressure. It is only used to measure the atmospheric pressure. चलिए, so the liquid used in the manometer, ये देखिए barometer के बारे में. So if you see this very well, barometer was first invented by Torricelli. सो उनने क्या किया था, एक इवेकुएटेड ट्यूब जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर से बड़ा हो, टू अवॉइड द कैपिलरी इफेक्ट, उसको इंसर्ट किया था इनसाइड ए गिवन लिक्विड, एंड जैसे ही वहां पे इवेकुएटेड ट्यूब को इंसर्ट किया वैसे लिक्विड राइज कर रहा था ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस. तो यहाँ पे ऐसा देखा गया था दैट देयर आर सम पॉइंट्स, जैसे ये है पॉइंट नंबर 1, ये है पॉइंट नंबर 2, सेम फ्लूइड सेम लेवल, द प्रेशर विल बी सेम विच वाज इक्वल्स टू पी एटीएम लोकल. द हाइट बाय विद द लिक्विड राइज वाज इक्वल्स टू h. तो P3 इस पॉइंट पे जो प्रेशर था वो उस कॉरस्पॉन्डिंग लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर था, कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन लिक्विड वेपर प्रेशर बट एट द गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो यहाँ पे एक इक्वेशन बनी थी दैट P ATM लोकल वाज इक्वल्स टू P वेपर प्लस रो GH. P ATM लोकल was equals to P वेपर प्लस रो GH. एंड फिर टोरिसेली परेशान हो गए थे ऐसे फ्लूइड को ढूंढने में जिसका वेपर प्रेशर बहुत लो हो, एंड उनको फिर मिला मर्क्यूरी जिसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो वेपर प्रेशर है वो नेग्लिजिबल है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो वेपर प्रेशर है वो नेग्लिजिबल है, इसी वजह से अपन लोग ये बोल सकते हैं कि फिर वो PV जीरो हो गया और P ATM लोकल हो गया रो GH के बराबर. P ATM लोकल किसके बराबर हो गया? रो GH के बराबर हो गया. So the two important characteristics for the fluids generally when it is used in manometer or whether it is used in barometer is low pressure and high density. So mercury is used as a barometric fluid क्योंकि उसका वेपर प्रेशर नेग्लिजिबल है. ऑल्सो वन मोर थिंग, इफ यू ड्रिल अ होल एट द टॉप ऑफ द बैरोमीटर तो क्या होगा बच्चा, मर्क्यूरी लेवल सडनली फॉल हो जाएगा क्योंकि ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से एयर आ जाएगी. ओके, इज दिस क्लियर? ठीक है सर. द लिक्विड यूज्ड इन मैनोमीटर, यहाँ पे मैंने बैरोमीटर नहीं बोला, मैनोमीटर बोला है. Okay, bacha. So the liquid to be used in manometer should have higher density for a given liquid column. Sir, when the pressure intensity at a point is more than the local atmospheric pressure, then the difference between the two pressure is called.
सो बच्चा, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, PATM लोकल, सो बच्चा इट इज गेज प्रेशर। So it is gauge pressure, positive gauge pressure. So the piezometric head in a stationary liquid or a static liquid. So piezometric head is equals to बच्चा pressure head plus datum head. Sir, P upon rho G plus Z, pressure head plus datum head. Sir, so बच्चा it will remain constant. समझ में आया? Sir, the absolute pressure in the flow system is
So बच्चा the absolute pressure of the system may be above, below or equal to the local atmospheric pressure. Okay, above होगा तो पॉजिटिव गेज प्रेशर, बिलो होगा तो नेगेटिव गेज प्रेशर, इक्वल तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो ही जाएगा. सो विद दिस बच्चा चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 की सारी आप लोगों के एमसीक्यूज पूरे हो गए. एक बार मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर. सर, the total pressure exerted on a system measured from the absolute zero pressure level, that is the perfect vacuum level, it is called your absolute pressure. Absolute pressure will be either zero or positive, it can never be negative. ये क्वेश्चन आप लोगों को आरआरबी में आया, it can never be negative. सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड बाय द एनवायरमेंटल मास. सो पीएटीएम लोकल फॉर द लोकल कंडीशन, तो वो हो जाएगा आप लोगों का पीएटीएम लोकल, मतलब आपके घर, मेरे घर या कहीं पे भी, मतलब इट इज नॉट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन. सर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? सर द प्रेशर एट द मीन सी लेवल एंड एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड इज योर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Also, sir, with the rise in altitude, your PATM local decreases at a rise of 1 kilometer. बाय द रूल ऑफ थंब ऐसा है कि आप लोग 1 किलोमीटर राइज करोगे तो आप लोगों का लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10% कम हो जाएगा. आप लोग 1 किलोमीटर राइज करोगे तो आप लोगों का लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 10% तक कम हो जाएगा. इज दिस क्लियर? देन गेज प्रेशर क्या है? सर द प्रेशर विच इज मेजर्ड अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Where the datum will be the atmospheric pressure. Gauge pressure can be positive, can be zero or negative. Negative होगा तो vacuum pressure हो जाएगा. So P gauge will be equals to PABS minus PATM local. So P gauge is equals to PABS minus PATM local. So P vacuum will be equals to PATM local minus PABS. Is this clear? Is this clear बच्चा? So with this chapter 1 and chapter 2 पूरे हो गए. There are some updates for you. So you can join our practice program batch for UPPSC JE prelims with India's top educator. Okay, जसपाल सर आप लोगों को इसमें पढ़ाएंगे, आप लोगों को बहुत मजा आएगा. सो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करें. यूजिंग माय कोड VENKATESH you can join SSC JE 2025 for 6 months by paying 3199, for 12 months by paying 4799 and for 24 months by paying 6399. Okay bacha, so level up your preparation this festive season and get flat 60% off on all the SSC JE and AE subscription to join our practice program batch for UPPSC JE prelims using my code VENKATESH. ये ऑफर 13th मार्च तक वैलिड है. इसमें आपके जो ऑनगोइंग सब्जेक्ट्स है वो है ग्रीन एनर्जी, दैट इज इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड बाय जसपाल सिंह सर, ICT बाय डॉक्टर स्वाति वशिष्ठ मैम, देन हिंदी प्रैक्टिस सीरीज बाय प्रवीण सर, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बाय अभिषेक श्रीवास्तव सर. एंड कर्तव्य बैच आप लोगों को मैकेनिकल के लिए ऑलरेडी ऑनगोइंग है. अनअकैडमी प्लस आप लोगों को देता है रेज एंड फीचर, क्लास एंड आउट्स, इन क्लास पोल, DPPs, एजुकेटर कम्युनिटी का एक्सेस, learn live from the comfort of your home, study material in the PDF format, unlimited access to all the batches in class and top educators of India on this digital learning platform, and you can be the next Unacademy SSC JE, Unacademy RRB JE top ranker. RRB CBT2 की तैयारी में ये क्लासेस आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से. सो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम.